So time to go further to Jabalpur. It will take 3 hours from here, and there is a train that goes from Ambikapur to Jabalpur. It comes at here at 11:30, and 2:30 we will be there. 2:40 we will be there actually. 3 hours 10 minutes. So it was a very nice journey, and this is the small Umaria station. Beautiful sleepy town, but nothing to write home about. We are about to reach Jabalpur.
Пойдем. Какашки, ты узнал, да? Да, еще нам скажет, выходите быстрее. Я пойду посмотрю, как этот цветок выглядит. Ой, я так прячу. Говорю, присядь. Присядь. Байрат. So this is Dumna Nature Reserve. We had a evening free and we decided to come here. Good excursion, like 14 kilometers away from Jabalpur city center. And 20 rupees is the entry fee. And auto took 110 rupees to come here. And it has 17 kilometers of cycling track. And there is a small train also that goes through some part of this park. And for children having a good evening, this is a good place. Plus for exercising, cycling, jogging, seems like a very promising place. I can hardly believe this kind of well organized, clean, nice place also exists in India. And there I saw in that part a lot of deer. And I was told, now it is 5:40 p.m. and I was told by this patrolling guys that there are leopards also that live here. So in late evening they don't allow anybody to go into that other stretch of the lake because there can be some violent wild animals hiding there. So that's why it's time to come out. And now everybody is going out, leaving the park with this beautiful, beautiful sunset. So when you come here, you make sure you have time, and advisable time will be to come at 4 because it takes a lot of time to see. And in the end, you know, around 5:30 or 6 they are saying that there are wild animals, so you need to go out. So advisable time is to come at 4, and it is 17 kilometers track, so remember. So do visit. Here is our Ola. We are going back. See you soon. So today we are in Jabalpur, and just to make use of the day, we decided to have some local excursion because anyway train is in the night. So we are heading to Bheda Ghat. Food scene is very good here. Yesterday we ordered some biryani and some burgers. They were really tasty. And on both sides of the road very often you see sugarcane juice because this is a sugarcane cutting season. So far so good.
So we have turned inside from the highway and it is 7 kilometers inside. Now we are on the smaller road and soon we will be in Bhedaghat. It is 3 kilometers away from here, from this point. I last came in Bhedaghat in 2011. Then this road was not in existence. And there is a MP Tourism Hotel, Marble Rocks here, very much near Bhedaghat, those who want to stay there. साड़ी कलर उतरी जी का पिंक हो गई अच्छा कच्चा मारूंगा पक्का साड़ी बम्बई की भी इसलिए कलर निकल गया Pink color marble. ठीक है भैया Not exactly pink. Pink is pink. आगे वाली जगह का नाम है सर जी बाबूजी भूल भुलैया जगह का नाम आप लोग सभी लोग रास्ता बताइए अपनी बोट कितने से में आगे चलेगी बताइए सर लेफ्ट है राइट पूछ रहा गाइड राइट तीन है रास्ता ही के उधर जाएगा देख मैं बोल रहा हूँ देख राइट सभी लोग बताइए उसके पीछे जाएगा Wow. जो बोलेगा सही उतारा जाएगा यही जो बोलेगा गलत उसको उठा के पलट ये देखो साइड में काला वाला सड़ी पत्थर देखो ग्रे मार्बल बच्चे लोग जिसमें लिखते पढ़ते ना अब यहाँ से देखो सर पीछे का बैकग्राउंड देखो लाइट ब्लू मार्बल है ये दूर से क्लियर दिखता है फाड़ता फोटोग्राफ वेरी नाइस पीछे का सीन Wow. कचरा टापो टाप ये देखो भैया सामने पर देखो गोल्डन कलर मार्बल सुनहरा पत्थर है मैकानास गोल्ड ये देखो सामने हिंदी पिक्चर में निकाला था एक जंजीला में वाला सीन कलाकार थे धर्मेंद्र डैनी ऊपर से जंप लगाते हैं बाकी सर बोली लगाते हैं उस पर डमिंग कराया जाता है Some movies were वो shot. जंप This लगाएंगे does a दोबारा lot. फिल्मों में They jump from the top of the rock. साइड में सर होटल बना हुआ है देखिए जंगल पार रुकने के लिए एमपी टूरिज्म तालुका है होटल मोटल रोकने का 3000 का टोटल साथ में मिलती है एक होटल पानी वाली बिस्लरी बॉटल फ्री है सर जिसकी नई नई शादी होती है ना इसी होटल को बुकिंग करवाते हैं और दूसरी बार आते हैं तो धर्मशाला ढूंढते फिरते हैं पहली बार ज्यादा पैसा खर्च होता है लोग भी बढ़ जाते हैं ये देखिए सर कच्चा जो मार्बल होता है ना पानी की बिलों से निकल गया इसलिए गड्ढे गड्ढे हुए हैं नदी पर जब बाढ़ आती है ना बाबूजी ये भर के चलता पूरा पहाड़ बारिश के दिनों में उस समय अपनी बोटिंग सर बंद हो जाती है 15 जून से अक्टूबर में चालू होती है बारिश में ये लग जाता है क्या हो जाता है पूरा पहाड़ तक जाता है Ира, осторожно, не урони. Давай мама будет держать, она нам будет давать. So we are in Bhedaghat doing Нам boating. будет давать по кусочку. This is Narmada River, very reverent. It starts from 250 kilometers upstream from Amarkantak. It's very clean, blue color, and you won't believe it is 450 up to 450 feet deep here. It looks very calm and serene. And children are busy throwing bait to the fish, feeding fish. And these are all marble rocks. Дай мне еще. Много, дай.
ये साइड का सीन देखो भैया, ऐसा लगेगा ना छोटा छोटा मूर्ति बना के फिट कर दी, ये नेचुरल खजुराहो। ये वाला सीन देखो, अभी देखना इसको चांदनी रात में और कैमरा हाथ में, फैमिली और साथ में फिर घुमाते हैं बेड़ा घाट में। जिसकी फैमिली नहीं साथ में है, पूरी बॉटल हाथ में, बैक मारते हैं लम्मा, गाना गाते हैं शम्मा शम्मा, यहाँ मिलती है पप्पू की अम्मा। पास हो गई। साइड में देखो भैया, काली काली जो मूर्ति बनी ना हाथ पर शेर, इसको कालमेरा बोलते हैं। कालमेरा की मूर्ति काली काली। उज्जैन में बड़ा भाई है, बेड़ाघाट में छोटा भाई, और 450 बड़े Хорошо, Багирач, давай. Не надо заканчивать слишком быстро. छोटा सा आ गया। Ты тебя бабушка тоже звонит. आ तो गया है ना। Только одну, молодец. Lisa is in throwing mood. Bait to the fish. Это сильно быстро просто. ये 10 फीट का पहाड़ देखो सर, मंदिर की तरफ नजर आएगा। नेचुरल नर्मदा टेम्पल, उसका देखो सैंपल। ये देखो सामने वाला, इसमें जो बैठे हुए लोग, ये मंदिर की तरफ नजर आता है। और यहाँ देखो पीछे व्हाइट रोज, ये देखो खिलते हुए नजर आता है, गुलाब का फूल। यहाँ पीछे देखो ना, बैक साइड है। Ira, look here. We'll take turn for a minute. मजा आता है नहाने में आगा ना हम तो खेल लें तो उसको क्या यार अभी वो साहब क्या है ना कुंदन ले लेने 8-10 को करता ही नहीं। अगले दिन मुझे बहुत पता चल रहा अच्छा है फाइलर है लाइनर के बारे में। किसके? Пошел Лиза and her арбуз. Yeah, yeah. На, тебе пару штук. माल तेरा माइनस Ira, take. Rest. Sit. Lisa. Listen here. Sit. हेलो भैया, सामने का सीन निकालो। So this is the Bhedaghat ticket counter. For an individual boat it will be 800 rupees, and if you sit per passenger it will be 100 rupees per passenger, and the ride is like 1 hour or 45 minutes. So very good experience, I would say. We went per seat, so we gave only 200 because children are free. And this is Panchavati Ghat. This is considered like kind of a clean ghat in Narmada to have bath in this area. So now we are going to have bath. Considered one of the holiest rivers in India, Narmada. So just had a very refreshing bath in Mother Narmada river.
Very beautiful. This is called Panchavati Ghat. It is on this near Bheda Ghat boating point. Near Marble Rocks. There is a temple also in front, under a very old tree. Bhagirath just finished his mango ice cream and he liked it so much that it is all over his face. And in hands are very sticky and very sticky. How did you like the ice cream, Lisa? I like it very much. Which flavor was it? Mango. Oh. And we are here. The great Dhuandhar waterfall. Somebody is swimming there also. Probably they are coin divers. There is a cable car also there that takes you to the other side of the waterfall, to that snacks point. And those people that who are standing on the other side, they have come by the cable car. Last time I was here in 2011. And nothing has changed whatsoever. This is the end of March, last week of March. So I think if you come during monsoon or post monsoon, it can be very high. So this is the famous balancing rock of Jabalpur, and you can see how strongly it holds on to its balance. It is on the footsteps of Madan Mahal, made by Rani Durgavati of Jabalpur. In the night, there are arrangements to lit it up.